So far, what has been your experience? Experience, sir, has been very fascinating, and I'm very excited because this is a thought which is not new. It has been going in my mind for last more than 30 years. And just as a background, I'm a chartered accountant and a law graduate, and worked for nearly 38 years in corporate India. And after that, I have ventured into this platform development around 2 years ago. And just to give you a little background is that for last 2 years, we invested all our time, energy, money, efforts, everything in understanding what is the meaning of manufacturing capacity. It's very easily said about manufacturing capacity definition, but it has so many nuances. You have sectors, you have subsectors. Each subsector has multiple processes, multiple machineries, multiple capabilities, multiple compliances. So what we did, sir, really what I had started was with that we hired a team of professionals who have spent at least whole of their career only on the shop floor. So all those who spend their life in the manufacturing shop floor were the people that I hired first to understand that how do they, kind of reflect the manufacturing processes and what is really how you arrive at the capacity. How do you arrive at surplus capacity? What are the criteria? How does it work? And Uday, who is my colleague in CTO, he was the first kind of, and I would call it an employee who joined me, and that was now 2 years ago. Though we launched our platform after doing the entire study, after having Siret from US based company to develop the technology, the information architecture, the proprietary algorithm to have a recommendation. Then we also had IIM Ahmedabad as our strategy advisors. So IIM Ahmedabad also had given their inputs as to how should we position. And I think I'm just taking this 5 minutes before we formally start and before you introduce your members. But the other thing that we did also is that as of today, while we speak, in last 2 months since we launched it, the banking sector, the governmental sector has been extremely positive because I think everybody wants to have the increase in the manufacturing sector contribution to the GDP. And we felt that the need of the hour is use what you already have rather than creating new things and not able to utilize any. So the whole objective is that medium-sized corporates, they really put their sweat, they put all their personal money, they put all their personal guarantees and everything and start the business. And unless and until they are able to utilize their capacities fully by having additional business, it becomes a little bit of an issue for them. So this platform is not only an MSME driven platform, but definitely helping the medium sized corporates to grow their business, which we will go through once we start formally the session. So I think as per the format, Apurva, I think first thing is that I think, we'll get an introduction of the people who are from the chamber, and then we can start having the small presentation what we have on for the chamber members. Uh, our chamber is basically MSME units based in Chandigarh. Those are the members. We Mhm. have about 250 members, and we started in 1992. Wow. Basic purpose was to take up the issues of the units with the local administration. So we are there in the various committees, maybe GST, maybe uh, all those committees the Chandigarh administration has. We are recognized and we are there in the in the membership. Wonderful. Wonderful. So one very useful under the MSME Act, there's a clause for delayed payments. So there's a industrial facilitation council, state wise they have, wherein anybody, any MSME units who's not paid within 45 days, because that is the main criteria. If the payments are delayed, the working capital gets affected.
तो ये बहुत अच्छा MSME एक्ट में प्रोविजन आ गया डिलेड पेमेंट का. So facilitation council is there. So I am there on the council also. It has all judicial powers headed by Director of Industries of the state. So baki any useful session we normally participate. Basically sharing all the information with the members. Lovely. Any new notifications or whatever government rules, regulations we share. And basically welfare for the MSMEs of Chandigarh. Great. So, sir, with your permission, can we just quickly firstly give you some introduction to Capsimize by way of a small 2-minute corporate video? Yeah. Yeah. We'll keep it brief. Yeah. We'll keep it brief. So therefore, I said the video is just a 2-minute video. Okay. Anand? Capsimize. Making Indian manufacturing capacities virtual through high-end algorithm-driven technology platform, resulting in improved ROI. Objective of the Government of India is to make India a self-reliant and global manufacturing hub. We at Capsimize would strive for optimal utilization of capacities, resulting in business growth, increased employment, and improved loan portfolio. With Capsimize, you can flexibly be a Capsimizer, meaning capacity provider, or be a Capsimizee, meaning capacity consumer. As a Capsimizer, you have surplus manufacturing capacity. The platform helps you find the right partner to enhance your business opportunities, resulting in higher capacity utilization and improved ROI. As a Capsimizee, you may be located anywhere in the world and are looking for pan-India manufacturing capacity options. The platform will help you to improve the effective cost of production through discovery of surplus capacities. You can continue to focus on your core competencies such as research, branding, global expansion, whilst the production needs are met through the recommender system on the platform. The secured cloud-based platform with its proprietary algorithm will use artificial intelligence to recommend the right partner for you and execute smart contracts on blockchain technology. To get started, register for free, upload your capacity details, which will be kept masked and confidential. Capsimize will help you execute long-term capacity underwriting contracts. Capsimize will transform the global manufacturing landscape with enhanced ROI at the fulcrum. Collaborate, coexist, co-elevate. Okay. So, sir, primarily objective yahi hai कि we want to align with the objective of like your association also. If we can say that it needs to help, you need to help your members to get additional business. We want to increase the manufacturing opportunities in India to become a global kind of a player. Right now, it's a very attractive, timeline for India because of large number of companies worldwide are wanting to do a sourcing security, and they want to look at India as one of the sourcing location for manufacturing needs. Go ahead. So right now, if we see that the government wants to grow the manufacturing sector contribution from 400 billion to 1.2 trillion out of the 5 trillion economy, and they want to increase the share from 15% to 20% of the manufacturing sector. So the focus is on manufacturing and MSME manufacturing contributions. Next. So, sir, what we have done is that we have selected these 5 sectors to begin with, which are textile, pharmaceutical, electrical, electronics, specialty chemicals, and auto components. Primarily, if you see the numbers below,
the government targets for each of this sector is to have a substantial growth, and that is the purpose for which we have selected these 5 sectors. Next. So, sir, really, if you see, this slide is very, very important, which is a Government of India slide. Majority of the countries, they use their manufacturing capacity substantially high, like Canada at 82, Japan at 94, EU at 82, Brazil at 82, Vietnam at 82, whereas India is only at 60% of capacity use. Now, realistically, we are really 19.5% lower than the developed economies, and even from the developing economies, we are practically 18.5% short. Now, without any capital investment, this is what happens if you utilize their capacities fully. And an estimated amount is that the 2% growth in capacity utilization, sir, will add nearly $8 billion worth of value of goods produced. So now this is the kind of information, and why it is required is that you have no new investment required, mainly no capital expenditure required, and you can save a substantial time in terms of setting up new facilities. Next. Next. So what we really define the 2 sides of the coin, one is called the Capsimizer, that is the one who has surplus capacity or the one who provides capacity. Second is the Capsimize. Now the Capsimize is one who is looking for capacity. Now the Capsimizers are only based out of India, whereas the Capsimizes who are looking for capacity can be located anywhere in the world. Next. So what really this platform will offer to your members? It's basically new and additional business opportunities, global visibility, which is very important because there are a lot of good companies with good manufacturing facilities, but they are not visible to the world. Not only forget the world, but they are not even visible to Indian entrepreneurs or Indian corporates. So this platform will give the visibility to these entities to showcase their capacities to the world at large. Of course, you are all in business, so any kind of increase in capacity use will make you cost competitive, will improve your ROI. Also, sir, from a capacity seeker perspective or the Capsimize perspective, it's a pan-India manufacturing options is what he can look at, resulting in improved cost of production. He can conserve the capital and use a plug-and-play kind of ready facility, so your CapEx becomes actually the OpEx. Also the sourcing security, as I said, world is looking at sourcing security. और ये सब लोगों का एक ही कहना है कि अगर इंडिया हमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में ऑफर कर सकते हैं, वी आर वेरी कीन ऑन यूटिलाइजिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज व्हिच आर सरप्लस. नेक्स्ट. So this is what I just mentioned to you. So how does it work, sir? It's very simple. Your members of the association can register on the platform without any cost. It's a free registration for them. Whether they are looking for capacity or they have capacity, both ways. The platform is designed by this company in such a way that it is all parameterized information. So it is so friendly to upload your detail that it won't take you more than 15 to 20 minutes to complete all your detail filling up. And the platform will search the right partner for you through its proprietary algorithm. And as I said that we have spent a lot of time in understanding what is the sector and what are its nuances. So quickly taking you through in the sectors also what we have done. Suppose we take textile. So now in textile, we have broken this sector into like spinning, fiber, weaving, knitting, processing, garments, everything. And then each of these subsector is further divided into multiple kind of processes, machinery, their capacities, their compliances, their capabilities, plus all the paraphernalia of infrastructure that they have. Like if we take pharma, we have both bulk drugs and formulations of all kinds. Next. If we take specialty chemicals, then how do you really measure because specialty chemicals can be 7,000 different chemicals you can make, but what really you need? You need drying equipments, you need reaction capacity, you need milling and sizing, you need blending, sieving, filtration equipments. So each of the processes divided into its own subgroups. Next.
So if we look at electronics, you have encasing, which can be for multiple uses by using the facilities such as either PCBs, press metal, electronic components, or plastic molding, injection molding, all kinds. Next. Say in case of auto components, if we see that you have processes and you have components, so processes are further divided right from say casting, plasting, press work, machining, metal joining, forging, chemical, components also each individual component, and then they are subdivided into their machinery, then their capabilities, then their ancillaries. Next. Sir, this is an interesting feature which came out is the making the capacity sector agnostic. यानी क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो एक बिजनेस में है, we always focus to get new business in the same sector. जैसे अगर हम लोग ऑटो कंपोनेंट में हैं तो हम लोग यही देखते हैं कि हाउ विल आई गेट मोर बिजनेस इन ऑटो कंपोनेंट सेक्टर. बट जब हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एनालाइज करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आपकी अगर ऑटो कंपोनेंट में भी है तो यू माइट बी एबल टू यूज दैट कैपेसिटी टू मल्टीपल सेक्टर्स. आपका नया बिजनेस कैन कम फ्रॉम कंप्लीटली डिफरेंट सेक्टर्स जो हमने कभी सोचा नहीं था. पहले हम वही सोचते जो लाइन में है उसी लाइन में नया बिजनेस देखने की कोशिश करते हैं. Whereas here what we are doing is that we are making the capacity sector agnostic. Next. तो एक ये 3 मिनट का वीडियो है जो आपको बताएगा कि हम up to what length of depth do we go in terms of gathering information. So if it is okay by you, we can quickly show you this 3-minute video on casting process. Go ahead. Yeah, please.
So, sir, we can of course add multiple plants also to this information. So this is how the information in detail we collect, and that's why I said we spent a lot of time in understanding in terms of what is manufacturing capacity, how does it get defined. Now, the platform features, sir, are very, very detailed and very secured. We use the encryption. We have all the firewall-based design. You have OTP validation anytime you enter. You get your OTP on your mobile as well as on your email. The proprietary algorithm is the primary driver to recommend. This is an API integrated platform, and you can have a real-time search available 24/7, and it's cloud hosted infrastructure. So that's the primary features. Of course, जिनको detail में technology के बारे में बात करनी है, we always have Uday Mahdev here who can explain the details further on the technology. Next. So we are also going to be looking at multiple associations, sir. To begin with, we are already the members with various international chambers such as Indo-German Chamber, Indo-French, Council of EU Chambers of Commerce, Indo-Dutch Chamber. Indian associations may, we are with Federation of Indian Export, we are with IDMA, Indian Drug Manufacturing Association, Maratha Chamber, Textile Association, Electronic Industries Association, all the national association and the regional associations, we are already the members. And what we have done, sir, is that we are developing this is the last slide, which we have developed an ecosystem. The ecosystem partners are like the local, national, regional manufacturing association, you have international chambers of commerce, you have techno-commercial due diligence agencies, law firms, banks, as our ecosystem partner to help the transaction to get concluded. Next. So that's our brief presentation as to how we are doing, what we are doing, and what are the benefits to your members that the platform can offer. And now it's entirely up to you, sir, to take up any points that you want to have, any clarification, any questions you have. Yeah. Basically, seems user friendly also, because that is very important. Absolutely. User friendly. I appreciate the concept. I like the concept personally. Thank you, sir. Thank you. Because like you had given the data, only we have utilized 60-65% capacity, compared to international average should be 80% plus. Very true. Very true. We have our own limitations in India. The breakdowns and all, they also count a lot. So I'm sure this should be very beneficial. We'll circulate this webinar amongst our members. Sure. So, Amarpal ji, any questions you have? Amarpal, I think you are on mute. Who else is there? I'll try it, and I'll let my feedback to Mr. Apurva Mishra. Ritesh Arora, Vinay Gandhi, Ashok Goyal, Sanjeev Gupta, any questions you have if you're online? Amarpal ji, we will be Please go ahead. Please go ahead, Amarpal. Ji Avinash ji. So I will ask Apurva, of course, to get in touch with you whenever you have the time. In case you have any difficulty, all of us are available 24/7 to assist you. We are quite certain that on the basis of the last more than 250 corporates experience, that so far we haven't had any kind of issue or a problem in terms of registration, updation, uploading details or anything. But we are all the time available to you for any assistance that you need, or any of your association member needs any assistance or help. अविनाश जी, एक छोटा सा पॉइंट आपके उसमें लाना चाहूंगा. आपका जो पोर्टल है वो अभी तक मेजरली ना ऑर्गेनाइज सेक्टर को टारगेट कर रहा है. एमएसएमईज में एक बहुत बड़ा सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का होता है. बराबर. तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा सर्च कीजिए. बिल्कुल सर, आई एग्री.
उनके उनके कंपोनेंट्स या उनके जो प्रोसेसिंग है या कैपेसिटीज हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। सर बिल्कुल सही है। आई विल जस्ट ओनली रिएक्ट इन वन वे। व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि जैसे जैसे अपना प्लेटफॉर्म ग्लोबल यूटिलाइजेशन चालू होगा या तो डोमेस्टिक यूज से चालू होगा, we are definitely going to add two more things, and that is one is that we are going to add more sectors. जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने आगरा में कॉन्फ्रेंस की थी, तभी वहाँ के इंडस्ट्री वालों ने भी काफ़ी हद तक हमें बताया कि भाई आगरा में लेदर एंड शू इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री एंड व्हाई डोंट यू ऐड दोज सेक्टर्स टू अस। नाउ अमरपाल जी, क्या होता है ना कि कोई भी सेक्टर में बाय द टाइम वी रियली स्टडी कंप्लीटली कि ये सेक्टर किस तरीके से फंक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें काफ़ी समय जाता है। एंड द सेकंड थिंग दैट वी आर ऑल्सो डूइंग इज दैट वी आर वांटिंग टू गिव मोर एंड मोर विजिबिलिटी, अपनी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबल विजिबिलिटी देने की ये पहली कोशिश है। डोमेस्टिक को तो दे ही रहे हैं पर ग्लोबली भी, क्योंकि क्या है, एक ही बात बताता हूं मैं, कई सारी कंपनियां दुनिया में आज इंडिया की तरफ देख रही है बिकॉज दे आर गेटिंग स्केर्ड आफ्टर कोविड टू लुक एट ओनली वन कंट्री एज अ सोर्सिंग। सो मल्टीपल सोर्सेस के बिहाफ पे इंडिया इज फीचरिंग अ वेरी वेरी ब्राइट चांस फॉर द ग्लोबल प्लेयर्स, नंबर वन। नंबर टू, सेक्टर एडिशंस कर रहे हैं। नंबर थ्री, जो आपने कहा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, उसमें सिर्फ क्या होता है ना सर, कई बार उनके पास कैपेसिटी होगी बट ड्यू टू देयर ओन रिस्ट्रिक्शंस उनके कंप्लायंस के इश्यूज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं। एंड देन द पर्सन, लाइक समझो आपको उनकी कैपेसिटी अंडरराइट करनी है और उनकी कंप्लायंस की कई इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है, जैसे उनका बॉयलर है, इंस्पेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, उनका रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, रिजेक्शन का क्या करते हैं, ये सब चीजें उनके यहां से। सो एज ऑफ राइट नाउ मैं कहूंगा कि ये एमएसएमई के लिए डेफिनेटली बहुत यूजफुल है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हम अभी तक जा नहीं पाए हैं, एक तो साइज की वजह से, दूसरा क्या है कि कैपेसिटी अंडरराइटिंग जिसको चाहिए, इंडियन प्लेयर हो या इंटरनेशनल हो, उनको थोड़ा सा एक साइज की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमने शुरू में, वी आर नॉट डूइंग ओनली लार्ज कॉर्पोरेट्स, वी आर नॉट सेइंग दैट ओनली लिस्टेड कंपनीज विल डू इट एंड ऑल दैट, वी आर लुकिंग एट एमएसएमई सेक्टर इन अ बिग वे। बट अनऑर्गेनाइज अभी तक हम जा नहीं पाए हैं, बट योर सजेशन इज नोटेड, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू डू इट। बट सेक्टर एडिशन पक्का करने वाले हैं एंड फेज 2 में वी आर डूइंग ग्लोबल कैपेसिटीज फॉर ग्लोबल यूज। यानी आप अगर कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो वियतनाम में या तो टर्की में या तो यूरोप में, you don't need to really incur the logistic cost, nor do you need to incur any capital expenditure. You will have the capacities वहाँ पे जो available है वो आप उनके साथ 1 साल के लिए 3 साल के लिए अंडरराइट कर लो उनकी कैपेसिटी, और आपका प्रोडक्शन यूनिट वहाँ विदाउट एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर चालू कर पाओगे। सो ये फेज 2 में है। फेज 1 अपना ये है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो सरप्लस है वो वर्ल्ड ओवर जिसी को भी चाहिए उनके लिए हम ऑफर कर सकते हैं। और फेज, या गो अहेड। फेस करना चाहता हूँ ना, वो ये नहीं है कि आपका लिए जो भी, माय पॉइंट इज द डेटा यू हैव सजेस्ट दैट कॉर्पोरेट्स ने तो आपके पास फटाफट आके इंटरेस्टेड होकर रजिस्टर भी कर लिया एंड दे हैव गिवन देयर रिक्वायरमेंट्स आल्सो एंड दे हैव गिवन देयर सरप्लस कैपेसिटीज आल्सो। जबकि एमएसएमई का एक बहुत बड़ा, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो एमएसएमई में 70% अनऑर्गेनाइज तरीके से ही काम करते हैं। ओके। तो अगर आप एमएसएमई को टारगेट कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बात एमएसएमई की ही कर रहा हूँ, माइक्रो की बात कर रहा हूँ, उनको भी कहीं ना कहीं दीजिए। अच्छा, दे विल नॉट बी एबल टू कम अप, दे विल से यार रिस्ट्रिक्शंस है बहुत सारी। वो आज की डेट में जो हमारा सबसे पहला चार्ट है कि वो हम 60% यूज कर रहे हैं, कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं इंडिया वाले, वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की जो मेजॉरिटी एमएसएमई है वो अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। एंड व्हेन अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन, सामने वाला अपने आप उस रिस्ट्रिक्शंस के कारण उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाता। सो इसको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल तरीके से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं, बट वो लोकली काम कर रहे हैं, बट उनको इंक्लूड करने के लिए आज तक ना विजन ही नहीं दिखी। रीजनिंग बहुत सारी है कि आपके पास जी एनएबीएल सर्टिफिकेशन नहीं है या आईएसओ नहीं है। आईएसओ इज अ सिस्टम जिससे आप इंश्योर कर सकते हो कि क्वालिटी ठीक है।
अगर कोई एमएसएमई प्रोडक्ट बना रहा है, क्वालिटी अपने एंड पे इंश्योर कर रहा है कि क्वालिटी ठीक है, अगर आईएसओ नहीं भी है तो क्वालिटी कहीं नहीं जा रही, वो ठीक क्वालिटी को ही ठीक करेगा। आईएसओ ये सिस्टम है, क्वालिटी ठीक करना वो एमएसएमई के हाथ में है। बिल्कुल। सिर्फ आईएसओ इम्प्लीमेंट कर क्वालिटी वो नहीं हो जाता या कंप्लायंस है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल अप्रोच देना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए, बिकॉज इंडिया का बहुत बड़ा सेगमेंट, अगर आपने आगरा की बात की, लेदर जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बहुत बड़े लेवल पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर आप इन चीजों पे, रिस्ट्रिक्शंस पे काम करेंगे तो आपको क्लाइंटेज ना अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। आप बिल्कुल सर, जस्ट एक ऐड कर रहा हूं मैं पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर नॉट लुकिंग एट इट, सिर्फ एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि अगर हम एमएसएमई की भी सिर्फ अगर बात करें, वी आर नॉट इवन, सपोज वी डोंट टॉक इवन अबाउट माइक्रो और द अनऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ द एमएसएमई। सर अपनी मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे भी, अपने यहाँ पे इंडिया में आज की तारीख में 1.96 crore manufacturing units are registered with the ministry, 1.96 crore, and जो सर्टिफिकेट लेते हैं उदान जैसा, वहां पे 6 करोड़ है माइक्रो एंड मिनी एमएसएमईज। तो हम ये सोच रहे थे कि पहले एटलीस्ट ये 2 करोड़ में से इवन इफ हम लोग 0.1% को भी लाते हैं तो भी 2 लाख कंपनियां अपने यहां आ जाती है। आज की तारीख में अपने को ये प्लेटफॉर्म को अट्रैक्टिवनेस ग्लोबली बनाने के लिए मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि अनऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ एमएसएमई हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहे हैं। क्या होगा, दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अपलोड देयर इंफॉर्मेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनको। ऐसा नहीं है कि वो पार्टनरशिप है या एलएलपी है इसके लिए वो नहीं आ सकते, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ समटाइम क्या होता है कि उनकी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट रहेगी शायद, तो इसके लिए उनको सर्च में जब भी वो जाते हैं लोग तो उनको कई सारी चीजें नहीं मिल रही है, तो फिर वो उनका ध्यान चला जाता है वहां से। ये एक ही है, बट अदरवाइज जस्ट टू क्लैरिफाई, वी हैव नो रिस्ट्रिक्शन कि भाई आपका मिनिमम टर्नओवर ये होना है, या तो आप यही आईएसओ सर्टिफाइड हो, या तो ये आप कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंफॉर्मेशन अपलोडिंग में जीएसटी नंबर छोड़ के कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं है। आप जितनी इंफॉर्मेशन भर सकते हो भर दीजिए, हम सर्च इंजन जो भी आदमी पूछ रहा है वो सर्च करते ही रहेगा, भले आप छोटी कंपनी हो, अनऑर्गेनाइज हो, माइक्रो हो, जो भी है। सिर्फ ये जो कॉर्पोरेट्स है वो उनकी इंफॉर्मेशन ज्यादा अपलोड हो जाती है तो उनका परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा है, पर इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि अगर आप माइक्रो या अनऑर्गेनाइज भी हो, आप लिमिटेड कंपनी भी नहीं हो, तो भी आप इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकते हो और वो सेम इंफॉर्मेशन विल बी व्यूड बाय एवरीबडी। लास्ट पॉइंट सर एक ही है इसमें कि कोई भी कंपनी, भले आप सीमेंस जर्मनी से हो कि आप कोई विजय इलेक्ट्रॉनिक्स बंबई से हो, हर एक कंपनी में से कोई भी कंपनी का नाम नहीं आएगा। इनको हर एक को सिर्फ एक 12 डिजिट यूआईडी कोड बन जाता है, तो वो यूआईडी कोड आपकी आइडेंटिटी है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम रोटरी क्लब में बैठे हैं, बाजू बाजू में सब इंडस्ट्रियल क्लस्टर से है, आपको ये नहीं अच्छा लगे कि यार ये पूछ रहा है कि अरे तेरे पास सरप्लस कैपेसिटी है क्या, आपका धंधा नहीं चल रहा है क्या। इंडिया में होते हैं कई सारी चीजें, और ये कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करने के लिए हम कोई भी कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करते, वो चाहे 10,000 करोड़ की कंपनी हो कि 10 करोड़ की कंपनी हो, हर एक को एक यूआईडी कोड आ जाता है। सो दैट्स द आइडेंटिफिकेशन सर। राइट, दैट इज गुड। या चंडीगढ़ में तो मोस्टली माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स ही हैं। हाँ, पर उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको। समटाइम्स क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी कंपनियों की हाँ इंफॉर्मेशन ज्यादा अपलोड हो जाती है तो दे बिकम फास्टर इन द सर्च, और कुछ नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं कर सकते हैं, हर एक आदमी अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर। So we will share all the details. I will tell Apurva to send you the presentation also, the video also, demo video also. आपको भेज देंगे, आप आपकी थ्रू वेबसाइट हो या तो आपके मैगजीन के थ्रू, जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से हम पब्लिश कर देंगे।
and then we'll take it forward with your members, and we need your support to take it forward, sir. Sure, sure, sure. Thank you. Thank you so much Wonderful. Thank you very for much. the presentation. I think this should be useful when people get to know, because the concept is new. So once the members go through this session, I'm sure there should be some positive feedback. वंडरफुल वंडरफुल। और अमरपाल जी भी, आपने भी ये जब भी अपलोड करनी है, अगर कोई भी दिक्कत आती है, जो आपका फीडबैक होगा प्लीज हमें बता दीजिए ताकि हम इम्प्रूव कर पाए। Right, sir. Right. For any reason, if there is any difficulty, we are more than happy, sir, to assist you, and I'm sure it will not need assistance. So let's see. ये एक अच्छा चैलेंज है हमारे लिए भी। Very good, very good. So thank you very much, sir, and looking forward to get your other members also join us. All right, sure. Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much, Thank sir. you. Thank you. Thank you everyone for joining. Thank you so much.